Students, welcome to the video lecture series for the subject business economics. Students, today I'll be talking about break-even point. Break-even point is the point where there is no profit, no loss for the organization, or or a point where what all costing the firm has borne can be recovered by the profit which the organization is earning. So in short, you can say it's a point. Break even means a point where where a firm is earning no profit and in fact it is earning no losses. Okay. Then the break even point, you can say it refers to the level of output at which total revenue equals to total cost. Now, obviously, management is not interested in the output, but in fact, it is like major area of concern that the firm is able to get the required return or not. So, in that case, you can say, therefore, the primary objective of using break-even analysis chart is to take analytical decision regarding to check out the effects of change in output and sales on total revenue, on total cost, and ultimately, like if it's the costing is less and the revenue is more, so obviously ultimately it will lead to total profit. So break-even analysis is very generalized approach and it deals with a wide variety of questions which are related to profit planning and forecasting. So of course, we all know that obviously the objective of business economics is to analyze, is to forecast, is the forecasting, and obviously the forward planning. So break-even analysis helps you in that way. So now, like, what are the basic applications of break-even analysis? So obviously it tells you like what happens to the overall profitability when a new product is introduced. Second, what level of sales is needed to cover all the cost, so like what quantum the firm should produce. It also tells you what happens to revenues, what happens to cost if the price of one of a commodities product is change. Now it also tells you about the alternative investments option through which you are getting with the like alternative options of investment which are offering you the greater margin of safety. Yeah, that is the margin of profit. So like again, you can say that the break-even analysis basically helps you in telling you about the overall profitability if the company is purchasing new capital equipments, or it is incurring higher or it is incurring lower fixed or variable costs. So these are the various applications of break-even analysis. Now, like if you go through this content, here it's mentioned that variable cost will be recoverable due to the excess of selling price over variable cost. तो हमने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है कि एक फर्म के लिए अगर उसका शटडाउन पॉइंट देखना है तो एटलीस्ट द फर्म शुड बी एबल टू गेट द वेरिएबल कॉस्टिंग विच द फर्म इज एक्चुअली बेयरिंग. सो इट इज like anything over the variable cost means that in that case we will have to analyze the break-even point for its recovery. Now, fixed cost, as we know, can be divided into operating fixed cost and financial fixed cost, and on that basis of break-even point we can calculate the operating break-even and the financial break-even. Operating means वो operating जिसमें fixed cost of the business can be recovered, whether in terms of output or in terms of rupees. So in terms of output means we are talking about the number of units which is required to be sold in order to recover the fixed cost. And if I'm talking about in terms of rupees, obviously the amount of sales which is to be done in order to recover your fixed cost, like the amount. Okay. Now, and when I'm talking about the financial break-even, obviously I'm talking about the financial fixed cost at what level the financial fixed cost of the business can be recovered. So obviously we are talking about EBIT, that is earning before interest and taxes. Now, जब हमसे अब आपके पास क्वेश्चन जब आएगा, यू हैव टू एनालाइज द ये ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ रुपीज. तो अगर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट आता है तो ऑब्वियसली क्योंकि आपको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स से आप अपना फिक्स कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट से यूनिट रिकवर करना मीन्स द फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट अपॉन ऑपरेटिंग अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. एंड जब हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ सेल्स मीन्स कितना अमाउंट जिससे which can be done in order to recover your fixed cost. So in that case we'll divide the fixed cost with the PV ratio, that is profit volume ratio. So now there is a question in front of you. आपके पास sales दे रखा है, आपके पास variable cost दे रखी है -4, sales per unit is 10, contribution आ गया 6, means contribution is sales minus variable cost will give you your contribution. In this case the contribution is 6.
Now the fixed cost obviously is 18,000, and gradually we'll get our earning before interest and taxes. So like अगर अब हमसे कहा जाए कि you have to calculate the operating BEP, तो EBIT of the business will be zero, as therefore we can say that at operating BEP, operating break even पे क्या होगा, contribution is actually equals to fixed cost. Contribution per unit कितना है यहाँ पे, contribution into number of units will be equal to fixed cost. तो number of units will be equal to fixed upon contribution per unit. तो number यहाँ पे it can be calculated as fixed cost is 18,000 and number of units which I am dealing with, यानी कि आपके कितने हैं, 6, कंट्रीब्यूशन 6 है और यूनिट्स वही आपकी 1000, तो उस केस में 6000 इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो 18,000 upon 6,000, this means break even will be at 3,000 units. Now अब इसको और elaborate करने के लिए, now the sales actually we know can be divided into variable cost. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट एंड ग्रेजुअली द सेकेंड पार्ट इज ऑब्वियसली योर कॉन्ट्रीब्यूशन. तो वेरिएबल कॉस्ट के से वी विल कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इन 200 एंड अगर कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज निकालना है तो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200. तो ये जो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं तो बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग द रेशियोज, या आप कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ परसेंटेज. सो now students, like if the data of two particular period is given, then the profit volume ratio will be obviously in terms of change, that is change in profit upon change in sales in 200. ओके, तो लाइक जैसे प्रॉफिट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और जब आपको दो पर्टिकुलर पीरियड्स के लिए दे रखा हो तो यू विल कैलकुलेट द चेंज. नाउ एक क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स और पूछ सकते हैं, सेल्स टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट. तो डिजायर्ड प्रॉफिट, तो अब अगर कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस का यूज़ हम अगैन वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी डिसाइड करने के लिए कर सकते हैं जब हम अपना टारगेट प्रॉफिट फिक्स कर लें टू अचीव अ टारगेट लेवल ऑफ प्रॉफिट. तो अगर हमें ये टारगेट लेवल ऑफ प्रॉफिट अचीव करना है तो अगैन हमें ये देखना होगा कि द फर्म इज एबल टू earn enough contribution to cover all its fixed cost and then make the required amount of profit. So desired contribution is equal to fixed cost plus target profit. In that case, desired sales is fixed cost plus desired profit upon PV ratio in 200. और अगर desired sales in terms of units निकालना है तो it's fixed cost plus desired cost upon contribution per unit. ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और बनता है, दैट इज ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड द सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट. भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स कितने मार्जिन से आप सेफ है, मीन्स एनीथिंग बियॉन्ड योर ब्रेक इवन विल गिव यू द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो उस केस में लाइक द लाइन इटसेल्फ सेज दैट द सेल्स बियॉन्ड द ब्रेक इवन volume brings the profit. So such sales is actually represented as margin of safety. Margin of safety is total sales minus break even sales. और अगर हमें margin of safety calculate करना है in terms of units, तो in terms of rupees, that is profit upon profit volume ratio. और margin of safety can also be expressed in terms in the percentage of sales, that is margin of safety upon total sales into 100. तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट. नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है एबीसी लिमिटेड इज ₹8,000 एंड द ब्रेक इवन सेल्स ऑफ द कंपनी इज ₹20,000. तो पहला कॉम्पोनेंट यू हैव टू कैलकुलेट द पीवी रेशियो. पीवी रेशियो ऑब्वियसली प्रॉफिट इन वॉल्यूम रेशियो, दैट इज फिक्स्ड अपॉन ब्रेक इवन सेल्स, यानी 8,000 अपॉन ब्रेक इवन पर जो सेल्स है दैट इज 20,000 इंटू 100 विल गिव यू 40%. और दूसरा दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ कंपनी ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ एक्चुअल सेल्स इज 50,000, मीन्स डिजायर्ड प्रॉफिट यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है. तो सेल्स 50,000 है. वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट इज एक्चुअली, हाँ ओके, यहाँ पे आपको दे रखा है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ द सेल्स इज 50,000. तो ऑब्वियसली 50,000 का, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज लेफ्ट ओवर पोर्शन, 40% इज योर प्रॉफिट वॉल्यूम, तो लेफ्ट ओवर इज योर वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 60%. तो 50,000 का 60% इज 30,000. द कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20,000. फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 8,000. Now after deduction of 8,000 you'll get your profit, that is 12,000. So this is the calculation of profit when the sales are rupees
50,000. Now next is calculation of margin of safety. तो margin of safety बिल्कुल straight forward calculate कर लेंगे. आपके पास sales दे रखी थी, आपकी sales है 50,000 और break even sales आपने निकाली 20,000. तो 50,000 minus 20,000 will give you 30,000. That is the margin of safety. तो स्टूडेंट इट इज़ जस्ट द बेसिक जो आपको करना है. आई ऑलरेडी शेयर्ड यू द कंटेंट रिलेटेड टू दोज ग्राफ्स ऑफ ब्रेक इवन, जहाँ पे हम आपको लाइव क्लास में इसका लेफ्ट ओवर क्लियर कर देंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.